Okay. Yes. Assalamu alaikum to every one of you and to Humaira as well, our guest trainer for today's Green Wisdom training track. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रीन विजडम ट्रेनिंग ट्रैक का आज थर्ड सेशन है और अब तक के हम दो सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हम नेचर से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं कि हम अपने क्लासरूम्स को नेचर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ रिफ्ट बिटवीन दैट कि हम कॉन्क्रीट जंगल में फंसे हुए हैं और बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती हैं लेकिन यस वी कैन क्रिएट दोस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज एज अ टीचर we are here to bridge that gap among our children and that academia. So इसी उसके साथ हम ग्रीन विजडम ट्रेनिंग ट्रैक का जो पूरा ये सीजन है ये लेकर चल रहे हैं इसके अंदर आपको 6 ट्रेनिंग्स ऑलमोस्ट मिलेंगी डिफरेंट सैटरडेज को डेफिनेटली एंड आई होप कि आप अब तक एंजॉय करे होंगे ये सारे जो दो सेशंस हो चुके हैं और बाकी के सेशंस डेफिनेटली आज का भी और आगे आने वाले सेशंस भी सो कीप मी कीप अप इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग ट्रैक एंड क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या चीजें और हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं राइट सो मूविंग अहेड लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट हुमैरा लाखो अस्सलाम वालेकुम हुमैरा Walaikum assalam, Ms. Farah. And I feel so good whenever you invite me because you are my mentor. And I feel like it's like flying up in the sky that my mentor is asking me to give my reflection regarding some subject. So it's an honor for me to be with you as a guest. And I feel so happy. This is the only reason. Otherwise, on Saturdays, it's very tough for me. Yes. After this session, I'm going to leave. I have to go outside for some work. But it was an honor for me when you asked me, and I was honestly speaking, it's a really, I feel happy to share something with you, my mentor, and I feel really good. With our audience as well. Thank you so much, Humaira, for joining us and taking this privilege of going along with this track as well. क्योंकि जब हुमैरा से मैंने बात की थी तो हुमैरा वाज वेरी एक्साइटेड कि यस नेचर एंड कनेक्शन इस मजे का बन सकता है सो हुमैरा इज बेसिकली शी इज द डायरेक्टर ऑफ एड पैशन that is an educational consultancy she has a background of English language proficiency and she has been a trainer in her forte is English language as well so she has been into this field since more than 20 years, Mera, right? And she has done some training courses as well from Teach and from Seek and from other organizations as well. She's a certified trainer as well as she has been doing a lot of stuff. So welcome to you, Humaira, and I hope कि आप हमारे साथ हैं and disconnect नहीं हुई हैं. Right. Okay. Right. Okay. Welcome back, Humaira. कोई बात नहीं कभी कभी थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है Yes, Humaira. So let's start with your presentation and today's topic as well. आज आप हमें क्या बताने वाली हैं लैंग्वेज के हवाले से एंड ग्रीन विजडम ट्रैक में Okay, let me just first share my screen, then I'll just give you a little bit of briefing. Okay, just give me a minute. Okay. Okay. Now, first of all, I would like to thank Ms. Farah for giving me an opportunity to discuss my experience with you people and welcome everybody who has taken out some time to learn about this language. You know, my expertise lie in English language. I have been teaching English language for almost, 2 decades. Let's say
more than 22 years now. And mostly we do use this green language techniques and strategies, but we don't know what we are using actually. And when we talk about language, for most of you, language becomes a horror movie. How many of you think when we call out the name language, especially English language, how many of you consider it as a horror movie? I would be very happy if you were going to use the chat box. Okay. Me, Sumaya. Okay, okay. Bano, okay. Who else? Everyone feels comfortable with the English language? Sometimes me. Okay. My childhood, I was. You were. Me as well. Okay. Rubina says me as well. And have you ever heard this word green language? What comes in your mind when we have reflected this caption that green language learning through nature? What did you understand? What was the feedback coming from your side regarding this training? Green language learning through nature. ग्रीन लैंग्वेज तो नहीं पता, गुलाबी उर्दू जरूर पता। So very nice answer. But this time you are going to learn about green language, which is going to be more of easier way to catch the language. Connection of nature with language. Yes, Salma, very true, very true. चले गुलाबी इंग्लिश तो नहीं डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी वी नो लॉट अबाउट गुलाबी इंग्लिश. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीन लैंग्वेज एज इज ग्रीन इंग्लिश. ठीक है जी. Let's move towards first of our objectives. Let's go with the objectives. Acha, the objectives for today's session. Acha, let us see. Acha ji, maybe easier way, sending fruits as a good gesture. Okay, Sana. Miss Farah, please note down the points. We are going to send them in the form of gift hampers. Fruits also. Nice idea. ठीक है जी. Objective for today's, let's first discuss about the objectives of today's session. We are going to know about the cognitive benefits of learning language in nature and awareness of the emotional impact of nature, again, which are linked with our language learning. Now, when we talk about language learning, consider this as a language, English learning or Urdu language or any other language. The strategies, the methodologies are same almost for any language. The only issue with us is like one of our lovely participants said, the Gulabi English. So we know a lot about Gulabi English. So we lay more focus on the Gulabi English rather than any other language subject. So when we are discussing anything related to language, it can be any language, German, Urdu, English, etc. Okay. And how we can implement the practical strategies and methodologies to improve our languages in the class. Okay. Are you ready, girls? We all are girls, right? We don't have male over here. Do we have Miss Farah? Mind na kar jaye wo gentleman. There are in the group, but abhi tak अच्छा जी. Ready? Okay. ठीक है. First of all, we are going to go with the interactive section. Okay, the more you interact, the more we are going to have the learning. And you can also discuss whatever there are any obstacles or if you're facing any problems. Okay. सबसे पहले, share your favorite outdoor place and one word to describe that place. Yes, your favorite outdoor place and only a one word or two words to describe that place. Come on. Thinking? You have lots of places? I'm going to start with Miss Farah. Yes, Miss Farah. Which is your favorite outdoor place? Mountainous region with lots of green, trees हो, बड़े-बड़े trees हो. Okay. मेरा जो garden है, सबसे best place, my own garden, and any garden. Any garden. Means greenery is your favorite place. Okay. Acha, Salma is beach, calm, peaceful. Oh my God. Shazia terrace.
And which word you are going to go for it? Sea view. Sana says sea view. सही है Sana. Sea view, beach, terrace भी आ गया. We have gardens for Miss Farah. Swings in garden. Rubina Said, very nice. Okay. And how would you describe those swings in the garden? वो जो जी swing, जी, come on, come on. Mm-hmm. उसके ऊपर झूला लेते हैं ना वो बारिश के अंदर, और वो साथ में मिट्टी की खुशबू आ रही होती है और साथ में Okay, बारिश okay. सही होती है. What happened? आप लोगों का कोई favorite place नहीं है? या you don't want to disclose? बताना नहीं चाह रहे? It's like है ना ग्रीन, कोई भी ग्रीन प्लेस हो वो फौरन से आप एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, टेंशन फ्री. Okay, Sana कह रही है tension free when forgot all tension. Very true. Walk in garden place, calm and peaceful. Okay, we have lots of people who want calm, peace in their life. बिल्कुल सही. Okay, okay, okay. Fine, fine. Okay, another question for you people. ठीक है. ग्रीन जो है वो न्यूट्रल कलर है, एक Neutral. कलर Okay. में हम मिडिल कलर है, और जो मिडिल पार्ट होता है ना वो रिलैक्सिंग नहीं होता है, ना अपर साइड ना लोअर साइड. तो आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? कहाँ पे मेरा आप? हाँ, मेरे घर की बालकनी जो बाहर की तरफ है, जो गार्डन की तरफ खुलती है. आपको भी वो बहुत प्यारा लगता है जगह, पीसफुल, काम, और आप अपने मसले मसाइल वहीं पे डिस्कस करती हैं अपने आप से? अपने आप से, हाँ, मसले दूसरों से नहीं, अपने आप से. दैट्स अ गुड मेथोडोलॉजी. चलें, ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, अब नाउ लेट्स मूव, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट ने कहा वी लव टू हैव पीस and calmness in our life, and we love to spend some time, and if we get the opportunity. अच्छा, imagine आप उसी जगह पे कुछ नई चीज सीख रहे हो, न्यू लैंग्वेज. क्या आपको आपको वहां बिठाया जा रहा है किसी भी नेचर वाली जगह पे, लेट्स से सी साइड, गार्डन हो गया, पीसफुल, कोई स्विंग्स में भी आप बैठ सकती हैं, कोई इशू नहीं है. आई वॉन्ट यू टू जस्ट इमेजिन दिस थिंग एंड शेयर समथिंग. क्या आपके माइंड में आएगा उस वक्त? कौन से वर्ड्स आएंगे? आप वहां बैठी हैं कुछ नया लेने के, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, न्यू स्किल. Just imagine you're sitting at your favorite place in a peaceful environment. What will shatter your mind? Okay. What I usually do is कि जैसे मेरा फेवरेट टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग है. Okay. सनराइज सनराइज का है, वो नजर आ रहा होता है. फिर बर्ड्स की साउंड, Good. ठीक. Very और nice. फिर गार्डन में जिनको तौफीक हो जाती है और जो वॉक करने आते हैं तो उनकी एक्सरसाइज हो रही होती है, या कभी वो लोग एरोबिक्स कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी लाइट म्यूजिक, बल्कि वो बजवा रही होती है, एरोबिक भी वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उससे पीसफुल इफेक्ट मिलता है. Peaceful impact. Okay. Okay. Thank you so much. Birds. Salma says that depth of the sea, no boundaries. Very good. And देखिए कितने मजे के आंसर्स आ रहे हैं. This is describing your personality also. Bird sounds after Fajr time. Birds chirping, flowers blooming, Rubina said. Okay, any more answers? G. Everyone is going towards nature. देखो आप लोग सब nature ही की तरफ जा रहे हैं. Being a human, we also are discovering lots of things from the environment as an adult. As an adult. Buzzing bees, okay, sometimes. Okay, okay, okay. Yellow seasonal flowers. Yes, seasonal flowers. See? और ये G. नहीं, और ये सारी अच्छी साउंड के बीच में जब वो वैन वाले का हॉर्न आ जाता है ना कि बस अब जाने का टाइम हो गया, वो अच्छा नहीं लगता. अब वैन वाले को भी अपनी काम करना होता है, डेफिनेटली. अब उनको इट करना मीन्स होता है, दैट, लेकिन हम तो अपनी अच्छा, हाँ. इट मीन्स दैट आप डिस्टर्ब हो जाती हैं. एक आपकी हाँ. लाइफ होती है, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड, एंड देन यू रियलाइज नहीं, लाइफ में और बहुत कुछ करना है, राइट? ओके जी.
ये तो हो गए आपके बारे में. Now what actually green language learning? I got the answer. One more. जी please. Yes, okay. Actually, what green language learning is, basically, as a educationists, as a teachers, we all want our students to be happy, isn't it? हम क्या चाहते हैं अपने students को? चाहते हैं कि they take the things from us very easily, memorize it, and become a happy student. कितने लोग आप में से चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को happy student करें, कोई उनसे forcefully कोई चीज ना हो, stress में ना हो? How many of you think like this? Me too. I want a happy student. Happy learners. Yeah, true learners. Because when you are happy, you learn quickly. You memorize quickly. And the concept of green language is learning something, the methodologies, the approaches which are real to your life. Right now, we have discussed about your favorite place, G. Happy study time, happy and satisfied. Very true, very true. Over here, let me देखिए हमने अभी आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे, यू आर एबल टू आंसर अकॉर्डिंग एज टू योर पर पर्सनालिटी, एज योर पर मेंटल कैपेसिटी. और पी उसमें जो मेन चीज थी, इट वाज पीस, काम एंड रिलैक्स. Why don't we go with the language, especially languages, because my topic is today about the languages, which should be fun loving, learning with fun, where you feel this is real to my life, this is me, yeah, this is me, this is not something out of the box, this is related to my life. The same things in a manner, and there are lots of benefits of it. अभी हमने अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस की और ऑलमोस्ट सबका यही था कि वी वांट टू गो एट अ प्लेस, हम स्टे करना चाहते हैं जहाँ पे पीसफुल हो, रिलैक्सिंग हो, और वहां पे हमें बहुत कुछ मिलता है, इनर पीस मिलता है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मिलती है, बहुत सारी चीजें. So we should adopt the same thing for our students also. It should not always be related to the classroom. It should not be confined only to the classroom. In fact, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे, हम more we can benefit if we are going outdoor. We are planning our lessons outdoor, and it is going to be more effectively for you also, for them also. हमारे टीचर्स का काम भी बहुत कम हो जाए. So far, any questions, anything you want to ask? That is actually the green language learning, which is related, which is near to our nature, our real life. जो चीज नेचर से ज्यादा क्लोज होगी, जो चीज नेचर में होगी, वो हम ज्यादा अडॉप्ट करेंगे. जो हमारे सराउंडिंग्स में होगी, we are going to adopt that in a more positive and more effective. Okay. Now, introduction to language. अब इसके क्या क्या फायदे? Why does it matter? Up till now, you understood that green language learning means the way we are going to adopt everything which is closer to nature, which is closer to our real life, which is closer to our mental health and our other abilities. अब आप बताएं, why does it matter that we should go with the green language learning? ज़्यादातर any possible answers? हमें क्यों इसको adopt करना चाहिए more into our classes, more into our lesson plan? What might be the reason? जी, जैसे आपने नेचर से कहा ना, नेचर से कहा तो वो नजर आ रहा होगा उसको, वो फील कर सकते होंगे, तो वो चीजें जल्दी आसानी से याद हो जाती है, समझ आ जाती है, अडॉप्ट हो जाती है. exactly, very good, so true. The thing we learn quickly, yes, we learn quickly. We don't have to memorize everything. We don't have to. We adopt that. It becomes your golden memory. It becomes the best time of your learning, and the best time is always in your mind. It's always remembered. Is always adopted. अच्छा, उसके कुछ फायदे होते हैं. उनमें there are certain reasons. Let me go back. Sorry. Like, acha, I have got one more. Acha, G. Student confirm teachers, students in classroom, but students learn more by using practical approach. So true. The more practical, the more practical you are, the more learning comes in your way. अच्छा, कांटेक्ट कर जल्दी और खुद से याद हो जाता है. ओके, नर्चर से नेचर. ओके, या यस सुमैया, नेचर से जो चीज आप लेते हो
that becomes easier for you. And there are lots of benefits which are related to the 21st century skills. ठीक है, जो चीज हम अडॉप्ट करेंगे उसका लिंक जो है, जो बेनिफिट्स हैं, some are visible and some are hidden, which we are going to explore today. First, we have to establish this thing, that why this thing is important, why it should be a part of our lesson plan. A lot of part should be based on this. ठीक है, इसमें कॉग्निटिव स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड मेमोरी, एग्जैक्टली गुड मेमोरी होती है. इसके बाद इफ वी अडॉप्ट ऑल द स्ट्रेटजीज, उसमें एक ऑब्जेक्टिव से आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है, इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज. ठीक है, so this is most important, that why it matters. It matters because you are going to enhance your cognitive skills, emotional skills, social skills, real life observation implement हो जाएगा easily. और आपका बच्चा 21st century skill में बहुत अच्छे तरीके से adopt करेगा, along with student centered learning आपकी हो जाएगी. It won't be teacher centered learning, it's going to be a student centered learning. And it's going to be fun also. ठीक है, अब according to research, there are lots of research made कि जो outdoor experiences होते हैं, आप बताइए आपको सबसे ज्यादा कोई ऐसी memory, just tell me, which you still remember, which you have taken class in an environment which was not confined to a room or an institution. You discovered and you researched for yourself. कभी ऐसा experience है, अभी तक कुछ याद है आपको, ऐसी कोई memory? Yes. Early morning learning. Sana says early morning learning. Okay. Field trip learning. Field trip, you remember. Okay. और कुछ भी which you still remember. Tell me about your childhood. कोई ऐसी memory, कोई ऐसी learning, कोई ऐसा experience, बहुत मजा आया हो. And you said, oh, I still remember how we had fun, and I still remember my research at that time. ये जो फील्ड ट्रिप कहा ना, तो जैसे हम गर्ल्स गाइड में थे, तो कैंपिंग जो हमने जो कैंपिंग की, उससे जो कुछ हमने कैंपिंग में 5 days में सीखा, वो आज तक याद है मुझे. Okay. Salma also says scouting camping. Okay. What did anything particular? कोई ऐसी चीज, ऐसा वर्ड आप बोलना चाहेंगे, ये मैंने वहां से टेक्निक सीखी, ये स्किल सीखी एट दैट एज? वहां हमको एक टास्क दिया गया था कि ये पोटैटो है जो कच्चा था, और कोई चीज नहीं है, आप इसको मतलब आप खुद अपने से पका के खाएं. तो वहाँ हमने सीखा था कि आग के अंदर अगर हम पोटैटो डालते तो वो जल जाता, तो वो मिट्टी के अंदर उसको रैप करके फिर उसमें डाला और फिर उसको स्टीम किया और खाया. तो वो चीज सीखी कि किस तरह मतलब रिसोर्सेस कम हो, वहां से मैंने ये सीखा कि कम रिसोर्स में हम किस तरह से अपना कोई भी काम कर सकते हैं. तो नेचर से ही रिसोर्स हम ढूंढे, तो कैंपिंग जो है ना, उसमें नेचर से रिसोर्स ढूंढना ही एक्चुअली टास्क होता था कि आपको अपने कपड़े learned from that and you still remember. This is the amazing. वही चीजें, तो इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट भी इसलिए था कि नेचर से हम कैसे लर्न करें. तो जो ग्रीन विजडम की ट्रेनिंग है, उसमें मेरा इंटरेस्ट इसीलिए है कि हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि नेचर ही हमें सब कुछ सिखा रही होती है. अगर बेसिकली देखा जाए, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम साइंस पढ़ाते हैं जैसे, तो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो बता देते हैं कि एरोप्लेन इन्वेंट किया उसने, तो बर्ड को देख के, तो नेचर को देख के, तो मतलब वो हमेशा से रहा ही है ये कि रिसोर्स को देख के तो सीखा है इंसानों ने इसी तरह. और फिर और मजीद कैसे सीखें, नया क्या निकालें, जो बन चुका तो वो अब तो यही बात हमें बच्चों में भी आगे पहुंचानी है कि हमें ऐसी चीजें प्लान करनी है जो वो लाइफ उनका एक्सपीरियंस हो. लाइक यू स्टिल रिमेम्बर, एंड आई थिंक दिस वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल भी अनकॉन्शियसली एट दैट टाइम यू वर टॉट अबाउट इट. अच्छा, सलमा. जी बिल्कुल यही है. Bushra says, I learned to push and pull concepts in the school garden. Oh, wow, that's a science concept. Okay. We paint pots in the pot painting. Good. Find new ways, make your own resources.
Okay, even abhi we took our students to Pasha Farm House to learn planting. Very good. Learn to grow using water wisely to water plants. See, these are skills which we have to develop, and it definitely आप लोग agree करोगे कि ये सारी चीजें जो छोटे छोटे से task हम remember, you still remember, are basically considering memory. आपका problem solving skill है, and oh, oh, just give me a minute. Okay. And resistance, resilience from my garden. Okay, Miss Farwa, Miss Farwa. Farwa is my daughter. Farah, it is like related to you. You are a greenery person, I would say. Okay. So these are few of the which we have experienced, and one more chat. Problem solving. Yeah. This is the main thing. And I think everybody knows 21st century skills mein ye sari skills play a very important part. This we want to deliver to the student, but in a hidden way. Like you got it, and we have to, but you know, with the passage of time, things have changed. अब शायद हमारे बच्चे स्काउटिंग में इतना एंजॉय ना करें जितना उनको हिडनली वी हैव टू डिलीवर सच थिंग्स एंड प्रिसाइसली अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें दूसरे डिफरेंट मेथड्स हैं. चलें, अब हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करते हैं जो अभी मिस बानो ने भी हमें हमसे डिस्कस किया था कि इट्स गोइंग टू हेल्प इन मेमोरी इनहेंसमेंट. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन एंड फोकस. आप लोग एग्री करते हैं कि जब हम बच्चों को बाहर निकाल के जाते हैं, इट कैन बी इन पर्टिकुलर टू एनी सब्जेक्ट, दे लर्न क्विकली and their attention and focus is more than it's confined in the classes. जब हम क्लास में बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे होते हैं प्रैक्टिकली, उससे ज्यादा जब आउटडोर एनवायरनमेंट हम वहां पे आपको सिखा रहे होते हैं, तो डू यू थिंक उनकी अटेंशन और फोकस ज्यादा होता है? दे Yes. लर्न क्विकली, दे रिस्पॉन्ड Yes. क्विकली. और क्या कर सकते हैं वो, और क्या करते हैं? एनवायरनमेंट तो अफेक्ट करता ही है ना, वो क्लासरूम के बोर एनवायरनमेंट से जो बोर हो गए होते हैं तो खुद ब खुद ही एनर्जेटिक हो जाते हैं बाहर आते. एग्जैक्टली जब हम इन्वायरमेंट ही हम अपनी लेसन प्लान में ऐसा करेंगे जिससे हमारी सारे मसले हल हो जाएंगे, तो व्हाई shouldn't we make this a part of our language? Boosting cognitive abilities through language. इसमें ये सिर्फ 3 I have identified. These are the most research based and proven कि हमारी memory enhance होती है, problem solving की skill develop होती है, and more attention and more focus. अच्छा, there's one more. ठीक है. Sometimes we also learn from them over there. Definitely we learn from our student. Experience, हमारा जो जितना experience हमारे स्टूडेंट से होता है उतना कहीं शायद किधर से नहीं होगा. सपोज इफ आई एम जस्ट गोइंग विद अ प्रेजेंटेशन, मैंने आपसे नहीं पूछा, अभी आई हैव गॉट सो मच फीडबैक फ्रॉम यू पीपल दैट आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू. जस्ट इमेजिन हाउ मच वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम आवर स्टूडेंट. चलें, अब एक दफा और एक टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा चले जाएं आप इमेजिनेशन में. हमने आज इमेजिनेशन में आपको ज्यादा जानना है. अच्छा, सपोज आप इमोशनली यू वांट टू हैव पीस. You are sitting calmly for an hour with at your favorite place outside. Just choose a one word which you are going to have it. आप 1 घंटे पीसफुली अपनी फेवरेट जगह पे बैठी हैं आउटडोर में, लेट्स से इन अ गार्डन फॉर मिस फरा, बीच पे चली जाएं. एनी इमोशनल क्वालिटी जो डेवलप होगी, कोई भी एक इमोशनल पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आ रही इस जर्नी में, एनी वन वर्ड, सिंगल वर्ड. सुभान अल्लाह. Subhanallah, very good. MashaAllah. Relaxing, okay. Relaxing. Sana says relaxing. Relaxation. बस सब रिलैक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा. सपोज यू आर वेरी मच ऑब्जर्वेशन थैंकफुल, बहुत एक मसला आ गया है, आपकी हेड ने आपको बड़ा टास्क दे दिया, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट. बेसिकली एनर्जी काफी ज्यादा मिल रही होती है, वो सारी चीजें जो अटकी हुई होती है ना वो समझ में आना शुरू हो जाती
एक हाँ आपका दिमाग चलने लगता है. In other words, you Exactly. start thinking. Okay, beauty of nature, thankful realization. Okay, Lubna Arshad, very good. I get one thing. Whenever I'm stuck at some problem, कोई problem होता है, तो I just want little bit of time for myself. And honestly, I get motivation. I don't know. When I'm all alone, I think about things. Suddenly, I get some motivation. I become more expressive. Oh wow, Bushra, that's something very good. तो अपने आप से बातें हो रही होती है ना, वो अलग ही तरह से हो रहा होता है वो. And sometimes you are कपड़े open कैसे to नहीं lots of पाता. things. Sometimes you become very open to lots of things which you don't want to, maybe you don't get the time to think about it. Yes. More imaginative. Negas, very good. Blessings from Allah. Actually. So, creativity. Creativity. See, I'm not saying this is something you are coming out. आप लोग लेकर आ रहे हो सारी चीजें. And these things are the only important element which are considered to be the 21st skills. इसमें creativity भी आ जाती है, आपके ethics values भी आ जाते हैं, आपकी thinking भी आ जाती है. So all this is giving you when you are sitting at your favorite place. Of course, you are not the students. ठीक है, अभी अगर हमारा होता, अगर फराह इजाजत देती, तो we would have arranged this class at some park or some good place. तो वहां पे और भी मजा आता, और वहां पे हमारा एक फ्लो ही कुछ और होता. Yes, I wish I could do this all in the natural place in Mind Shaka fresh. one day. Very. Exactly. जब आपका माइंड फ्रेश, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर एडल्ट्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड. लेकिन बच्चा जो होता है, उसका एक ही टास्क होता है, लर्निंग. और अगर these things should be provided in the same surrounding, just imagine if you're giving this everything to your children, to your students, the level of creativity, the level of thinking, the level of problem solving कहाँ पहुंचेगा. ये अभी हम सिर्फ स्टैब्लिश कर रहे हैं जो हमारे बेनिफिट्स हैं इस चीज के. इफ वी आर everyone agrees कि this green language या outside जो हमारी environment होती है, अब it does not mean you're going to take them to the mall. मॉल में नहीं लेके जाएंगे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, डेफिनेटली. वो तो आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और होगा, वहां पे पीसफुल नहीं मिलेगा आपको, और भी डिस्ट्रैक्शन मिलेगी. So we are talking about the environment, and in environment, setting up such an environment that children learn and adopt more from the environment unconsciously in a hidden way, and that will be very beneficial for them. So far, anything you want to ask? Acha, these are some of the benefits we get connecting emotionally with the language in a peaceful environment. That can be motivation, stress reduction, increased confidence, and what is this? Cultural connection. Now, cultural connection is also one of the basics of our this skill which should be developed. Now, what do you mean by cultural connection? Cultural connection कैसे हो सकता है हमारे से उनके? चले, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, बच्चा खुश है, हैप्पी है, लर्निंग कर रहा है, आप भी लर्निंग कर रही हैं, स्ट्रेस सबकी रिड्यूस हो गई, हमारी भी हो गई, उनकी भी हो गई, मोटिवेशन आ गई सबके पास. यस वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, लेट्स डू इट. टीम एफर्ट, कोलैबोरेशन, एवरीथिंग इज देयर. कल्चर कनेक्शन कैसे आ सकता है? अगर हम बच्चे को बाहर के इन्वायरमेंट में एटलीस्ट 15 डेज में एक लेसन दे दें, प्लान आउट कर लें, या वी कैन अरेंज इन अ मंथ, किस तरह आ सकता है जी? एनी हम पाकिस्तानी, जैसे अगर हम उसको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम ये कहते हैं हम एक मतलब एग्रीकल्चर कंट्री है, बाहर ले जाएंगे तो उसे कुछ नजर आएगा ना. मतलब मैं अपना ओके. एक्सपीरियंस एक बताऊं आपको कि एक स्कूल, होम स्कूलिंग में मैं ट्यूशन में एक बच्चा आता था. वो जिस स्कूल में पढ़ता था, मतलब वो ऐसा बेंगलोर स्कूल था जहाँ कोई किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने स्कूल खोल दिया था ना, और उसको वो साइंस में पढ़ाते थे. तो मैं ये देखती थी कि उसको इतनी दफा वाटर पढ़ाया गया, मतलब उसको ये नहीं पता इसकी मीनिंग क्या है, बस वो रट रहा. अच्छा, उसके सामने पानी का ग्लास रखा, उसने बोला इसको वाटर कहते हैं. नो मिस, ये तो पानी है. मतलब इस हद तक हमारे यहाँ रोड लर्निंग जिसको कहेंगे, उसको बाहर ये भी नहीं पता कि ट्रीज को कहते हैं, हर्ब्स को कहते हैं. मतलब वो लोग इतना रटाते थे. मैं ये कहती थी यार कैसे स्कूल है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, बस सिर्फ किताब पता है उसे कि इसमें ये लफ्ज होता है.
वो ये एक्चुअली अगर उसे नजर आ जाए तो उसे समझ नहीं आएगा कि अच्छा यही ट्री था जिसको मैं इतने दिल से याद कर रहा था। तो ये एग्जैक्टली। चीजें की कमी हो जाती है। तो मतलब कल्चरल अगर हम चाहें तो फिर हम लोग हमारे पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारे पास इतनी जगह है, हम इतने अच्छी जगह में रह रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वैसे And पढ़ाते। we are rich in our culture, you know, this is हाँ, the ये amazing कि हम thing. We don't know कितनी the चीजें importance हैं, and worth वही of it. हमें उसकी वो इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है, पता क्योंकि ही हमने नहीं है। वो उसको इतना हिडन और इतना उसको बैकफुट पे कर आर्टिफिशियल, दिया है। हमारा आर्टिफिशियल कर दिया हमने, एक आर्टिफिशियल वेरी एनवायरनमेंट दे आर्टिफिशियल, दिया। वेरी आर्टिफिशियल। तो तो इस अच्छा, वजह से सना के पढ़ते हैं हम रिमार्क्स। यस, इन इंटरनेशनल रिलेशन कल्चर कनेक्शन इज बाय व्हेन foreigners visit to northern areas of Pakistan and observe हाँ, different cultures. Foreigners are here to observe the different cultures, लेकिन हमें इतनी नहीं तौफीक होती नहीं होती। कि हम अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि कल्चर अवेयरनेस is one of the important factors of learning. Through this we can learn lots of things. हम पहले रिस्पेक्ट तो सिखा लें बच्चों को, हम में रिस्पेक्ट ही नहीं है एक दूसरे के कल्चर की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर सकती हूँ जी विद प्लीज फारा, प्लीज। जी जी यस। प्लीज गो अहेड। देखिए, कल्चर जो है ना वो लैंग्वेज के साथ जिस तरह से कनेक्ट है ना, और जब हम ग्रीन स्पेसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे बहुत सारे बैकग्राउंड्स के आपको एक ही क्लास में मिल रहे होते हैं। मिस बानो ने बताया कि यस, डिफरेंट कल्चर्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे की एग्जांपल दिए। तो जितने जैसे मैंने जब गार्डन बेस्ड लर्निंग अपना पूरा कोर्स करा रही थी मैं, तो उस वक्त मैंने बच्चों से एक काम कहा कि जितने डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे हैं ना, सब अपने अपनी लैंग्वेजेस के अंदर बताओ कि क्या इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, शोइंग द डिफरेंट थिंग्स टू देम। डिफरेंट। दे वर कमिंग विद देयर आइडियाज कि ये हम तो इसको ये कहते हैं, हम इसको ये कहते हैं। सो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एंड देन जो उस चीज के एक नाम निकले थे, वो पानी के डिफरेंट नाम बहुत सारी चीजों में डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर मिलते हैं सुनने को। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्ड्स, याद डिफरेंट भी मीनिंग। रहा, जब मैंने नेक्स्ट क्लास में पूछा तो बच्चों ने एंजॉय भी किया था एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, कि इस चीज को वो अपनी चीजें बताना शुरू हो गए नेक्स्ट क्लास में कि देखिए मिस, हमने हमारे गांव में जो है वो ये होती है चीज और यहाँ पे नहीं खाई जाती है। हमारे गांव में जो है उसको तर कहते हैं और यहाँ पे जो है वो कुछ और कहा जाता है। सो आई गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, जिसको यहाँ पे शायद कराची में वो नहीं हो, लेकिन वो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं, खाए भी जाते हैं, और they एंड enjoy इसके क्या मिला हमें, व्हाट बेनिफिट? नॉलेज मिली बच्चों को, it. Exactly. इजीली दे ग्रैब सो मच वोकैबुलरी, और Yes. एक वास्ट उनको एक आपको वास्ट इन्वायरमेंट मिली, इनरिच कल्चर मिल गया, जिसपे बेसिकली बहुत रिसर्च हुई है कि ये चीजें अपने बच्चों के सिलेबस में आपको डालनी है, इजंट इट? तो ये चीजें एक ही क्लास में आपको कितने अच्छे तरीके से मिल गई उनको। यू डोंट नीड टू वर्क ऑन देम मोर, दे गॉट सो मच गुड वोकैबुलरी विद देम, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो ये भी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि हम लोगों ने इट्स हैव मेड दिस कंपल्सरी, मैंडेटरी, कि इंग्लिश का जवाब इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है। आप कहीं भी देख लें, अगर आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें बच्चा इंग्लिश, आप अगर इंग्लिश में उनको क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दे वांट टू गिव यू द आंसर इन देयर ओन लैंग्वेज, इट्स ओके। उसको समझ तो आ गई ना, आपका ऑब्जेक्टिव उसको अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है? ये और नहीं जैसे कि आप इंग्लिश की क्लास में हैं तो यू कैन नॉट टॉक इन उर्दू, दिस इज, ये हमारे यहाँ एक फोबिया बन गया है। बट जब आप ऑब्जेक्टिव्स पे अपने गौर करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड करवाना, so that can be like that child or that person, that student can relate that thing with their own lives in their own language. I think यस, somebody, I'm sorry, I think जैसे I cut off. मिस ने अभी मिस फरा ने कहा कि वो एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम के हमारे इलाके में ये कहा जाता है, तो कम से कम उसको अगर वो पाकिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे तो उस बच्चे को ये अवेयरनेस भी तो मिली कि अच्छा मेरे शहर के अलावा भी कुछ शहर है। Exactly, see, हाँ, अगर तो देखा जाए तो you got lots of things over there. मतलब उन्होंने वहाँ का कल्चर तो दूर, उसका नाम ही पहले तो सिखाया आपने कि भाई ये भी कोई पाकिस्तान की दूसरी कोई जगह है, कोई शहर है, फिर वहां पे ये बोला जाता है, हम उसी से बढ़ा सकते हैं आगे कि भाई ये इस जबान में ये कहा जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ तो एक मुझे शौक था डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का, तो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आता था, मेरा छोटा सा नाम है 4 लेटर का, मैं उसको मैंने 10 लैंग्वेज में लिखना सीखा था।
तो कम से कम मुझे उससे ये Oh, हुआ कि वो उसके अल्फाबेट्स जो थे वो समझ आने लगे। बस मुझे शौक था कि मैं अपने नाम को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखूं, तो and उर्दू you में भी learned चाहती lots हूँ, of हिंदी things, में। right? हाँ, कितनी चीजें तो आपकी उससे समझ कुछ में बहुत है। कुछ सीखा। हाँ, जैसे सिंधी में ही अगर लिखा तो बे के नुक्ते उसमें दो होते हैं, वर्टिकल, तो वो एक अलग तरीके से लिखा गया वो नाम। तो इस तरह मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस से यूँ सीखा। तो ये भी मुझे See, एक लगता है एक तरीका this is अपना। how we are learning. We are learning from हाँ, sharing. मुझे तो स्टोरी शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माशाल्लाह हमारे पार्टिसिपेंट इतने अच्छे हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा सलमा, आई एग्री, we do not allow the practice this habit in class, but why? Because I am a teacher now, I can bet on this thing. I am doing this. If I am doing, anybody can do. Awareness नहीं है हमारे पास यही आदत है, बिल्कुल very true. Walk in English, talk in English, English is everywhere, sleep in Speak in English. English. ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उनको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दे, ऑब्जेक्टिव ये है कि इंग्लिश जो है ना उनको घोल के पिला दें, विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, विदाउट गिविंग देम अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा नाम या एनी लैंग्वेज का मेरे नजदीक इज नॉलेज और अवेयरनेस। जितने ज्यादा वास्ट आप उनको नॉलेज देंगे, वो उतनी वोकैब उनकी जमा होगी, द वे दे आर गोइंग टू स्पीक, द मोर लिसनिंग द मोर स्पीकिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है लैंग्वेजेस में मोर इनटू राइटिंग का काम होता है, क्योंकि दैट इज द प्रेजेंटेशन, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वट एवर। सो स्पीकिंग लिसनिंग आए ना आए, बच्चे को लिखना आ गया तो समझे वी आर डूइंग अ गुड जॉब। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस। Speaking and listening more should be through these exercises, through these स्ट्रेटजीज। अभी स्ट्रेटजीज तो हमने डिस्कस नहीं की, अभी तो हम सिर्फ बेनिफिट्स पे गौर कर रहे हैं, ताकि हम आपको उस तरफ आमादा कर सकेंगे। प्लीज अपने बच्चों को इस तरफ लाएं। और इफ यू आर हैबिचुअल और आपके को पार्टनर्स हैबिचुअल हैं, या यू डोंट हैव द परमिशन, गो फॉर इट, ट्रेंड सेटर बने। द फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन याद कीजिए जब भी आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, आपको लीड बहुत सारे आपको फॉलो कर रहे होते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इवन डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, बट वी स्पीक। यस। अब मुझे सलमा ये बताएं, आपने तो ये मुझे छेड़ रही हैं बिल्कुल। आई एम सॉरी फरा। इफ अ चाइल्ड इज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड, वो डिलीवर कैसे करेगा? फिर आपका पर्पस कहाँ गया? वेयर इज द पर्पस ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज? Purpose is not to show the books to the parents. Purpose is not to give a presentation. Purpose is that child should be able to deliver in the language. Your point is very valid, Salma. Your point is very valid. You should try this strategy. You have to work with those students. It's okay if you're going with English. If you just adopt these, एक garden में ले जाएं, अभी हम strategies करेंगे, वो अगर आप follow करें according to the grade and level, I think they are going to be very helpful for the teacher and for the students. अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं, उर्दू भी नहीं आती, तो डेफिनेटली अब दैट स्टार्ट फ्रॉम द किंडर गार्डन। ठीक है, किंडर गार्डन से जब उसको एनवायरमेंट मिलेगा तो एटलीस्ट उसको उर्दू आ जाएगी, उर्दू या इंग्लिश। ठीक है सलमा। सी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द किंडर गार्डन से अर्ली एजेस में, तो दिस इज डिफरेंट एनवायरमेंट, इसमें डिफरेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर देयर, उनके जो मदर टंग होती है इट्स डिफरेंट, उसमें वो ग्रैब कर लेता है बच्चा, बिकॉज इट्स अगेन लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। लेकिन एज ग्रेजुअली ऊपर जाए तो उर्दू तो उनको आ जाती है ना, बट इट्स ओके, इट्स ओके अगर वो उर्दू में भी अपनी बात आपको समझा रहे हैं, इट्स टोटली ओके। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ही और शी इज गोइंग टू डिलीवर इन इंग्लिश। अच्छा जी, टिल नाउ कोई क्वेश्चन, कोई बात आपके दिमाग में आ रही है जो आप पूछना चाहते हैं? अब टिल नाउ हम लोग सिर्फ बेनिफिट्स देख रहे हैं इसके। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? अभी फिर आप थिंकिंग के उसमें चले जाएं, फिर हम एक किस्सा सुनेंगे जरूर किसी ना किसी। अच्छा ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यूजुअली वी हैव, मोस्ट ऑफ अस डू हैव एक्टिविटीज लाइक दिस। क्या मिलता है हमें इनसे? इन एक्टिविटी से क्या मिलता है? आई थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट होता है, टीचर दिमाग खराब करती है, शोर हो रहा होता है, कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी के कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। क्या मिलता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स अगर वी टेक देम आउट? क्या सोशल हमें बेनिफिट्स आ सकता है? एंड व्हाई डू वी नीड दीज सोशल बेनिफिट्स? हमें तो अपना कोर्स कंप्लीट करना है, लैंग्वेज एक 1000 वर्ड्स दे देने, दैट्स इट, वो याद कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, क्रिएटिव राइटिंग में लिख लेंगे। क्या मिलेगा अगर वी गो विद दीज सोशल एक्टिविटीज?
तो आपका तो वर्ड ही वही है ना, सोशल। तो क्या सोशलाइजेशन मिलेगा? what we are going to going to get from social मिलती है ना, activities? उनको सोशलाइजेशन करना मिलती है ना, एक दूसरे के साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बात behave, करनी yes, है, तो attitude, वही मिलेगा। behavior, interact. बिहेवियर बिल्कुल सही। मिलेगा। न्यू एनर्जी मिलेगी ना, न्यू आइडियाज, वेरी गुड। सना एग्रीड, न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरीज, वो दूसरा ये कि वो अपनी एज इंटरेक्शन। के बच्चों के साथ, अपनी एज के बच्चों से सीखेंगे, कोई इम्पोज नहीं कर रहा होगा उनको, आपस में ही वो लोग सीख रहे होंगे खेल। एंड आप लोगों ने देखा है जब हम कहीं बाहर लेके लेसन प्लान लेके जाते हैं, अपना कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं, वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा जल्दी सीख रहा होता है, वहां पे वो स्किल सीख रहा होता है विच इज द नीड ऑफ द टाइम। कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, इंटरैक्टिंग, कॉन्फिडेंस। वहां पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में चुप बैठे होते हैं, लेकिन वहां पे बड़ा शोर कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लीलेंसी भी मिल जाती है हमें, और बच्चे एक दूसरे से अपने आइडियाज जनरेट कर रहे होते हैं, डिस्कशंस हो रहे होते हैं। Loving pets is also a language. Yeah, Miss Farah, I am the one. I love pets and I have the pets. हमें मिस फरा का भी नहीं पता था कि उनका प्लांट से इतनी एसोसिएशन है, तो मेरे पास भी बहुत सारे पेट्स हैं, एंड इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव एंड पीस. आई गेट peace and love by feeding them and sitting with them for hours and hours. Assembly present. Even they prove themselves in assembly presentation. Very good, Salma. I am very sure you must have experienced something related to this. अच्छा जी, अब तो हमने यहाँ तक डिस्कवर कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया कि okay, yes it is, yes it is. ठीक है, अब यहाँ तक हमने पहुंच चुके हैं, और इसके अगेन वही फायदे हैं, वो देयर आर द बेनिफिट्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, एंड आई थिंक कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन वो स्किल है एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. इवन एडल्ट्स में भी बहुत ये क्वालिटी नहीं होती, इवन एडल्ट्स में भी. आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज विथ मी, मैं मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग एंड नॉट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एंड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, तो मैं पीछे हो जाती. इसके बाद टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, जो हम इफ यू टॉक अबाउट वास्ट एरिया में आप देखें तो प्रोफेशनली मल्टीनेशनल कंपनीज में भी देखें, वहां पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन नॉट वर्क विद समबडी. ये सारी क्वालिटीज अगर हम, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. मेरा पॉइंट ये नहीं है कि एक बोर्ड का बच्चा ये चीजें स्टार्ट करे, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज. ये चीजें हमें पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, पार्ट ऑफ हमारे बच्चों की लाइफ में बनाना है. ये नहीं करना कि इट शुड स्टार्ट विद द सेकेंडरी, इट शुड स्टार्ट विद द बोर्ड. जब बोर्ड पे बच्चा पहुंच जाए, बोर्ड के एग्जाम में, उस वक्त तो बच्चा चाहता शऊर हो जाता है, शऊर आ जाता है बच्चे को. These skills should be given to the children at the very early age in a different way. किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी अलग है, प्राइमरी में एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ निकलेंगे आप. इसके बाद सेकेंडरी तक द चाइल्ड इज मोर अवेयर ऑफ द, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. Conflict resolution skills again, that if there's a problem how should we deal. अच्छा, ऑनेस्टली बताएं, हम में से कितने हैं जो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में परेशान रहते हैं? मेजबानों को तो नहीं बोलेंगे, वो तो बड़ी स्किल्ड हो गई होंगी. हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड टेकिंग द डिसीजन? और आप ये ना बोले, बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं ना, फिर उसको सॉल्व करने में तो हार जाते हैं। चले, जब छोटे आप छोटे तो आप हल कर लेती है ना. नहीं, तो छोटे प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा प्रॉब्लम बताऊं. वो मेरी ग्रैंड डॉटर जो 3 साल की, 2.5 3 साल की, तो वो बाहर से है, उसको सिर्फ इंग्लिश बोलना आती थी, और बड़ी मुश्किल होती थी उसे, कोई चीज भी उसको उर्दू आती नहीं थी. उसको हमें स्कूल ले गए, टेस्ट दिलाया, उसके मिस कहने लगी इसको क्या करेंगे, इसको तो सब कुछ आता है. अब वो जाहिर बात है, वो यही पूछे थी ना, फ्रूट्स नेम बताओ, और वो सारे बता रही थी. तो हम उसे कहते आप उसको उर्दू में पूछ के देखें, कुछ भी नहीं आता. तो हमें इसको स्कूल में इसलिए एडमिशन दिलाना है कि इसको उर्दू सिखा दो. वो कहेंगे यार तो उल्टा हो गया, सब तो आते इंग्लिश सिखा दे. हमने कहा नहीं, इसको उर्दू सिखा दो. तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो टीचर के लिए भी एक चैलेंज था. उसको यही था कि कैसे करें, मतलब लोग उस प्रॉब्लम किसको कहते हैं ये भी तो समझ आए. एग्जैक्टली. अगर आगे The प्रॉब्लम कहते problem is किसको. to understand the problem. हाँ, Okay, कि actually, what is the problem? Then we are going to प्रॉब्लम go.
हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें भी प्रॉब्लम तो होती इसलिए है, जो आपको लगा प्रॉब्लम कि नहीं होते मुझे वो भी बन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जाते। अच्छा जी, सना, सलमा, इज इट यस यू आर गुड एट इट और यू हैव द प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग ऑन इन चीजों में? सना, अच्छा सलमा है वो, सॉरी। सना कह रही है आई एम सॉल्विंग इश्यूज एंड गिविंग आइडियाज एंड सोल्यूशन। एग्जैक्टली। देखिए, ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, और बीइंग अ लीडर, बिकॉज टीचर्स आर लीडर्स, हम एजुकेशनिस्ट हैं ही लीडर्स। प्रॉब्लम सॉल्व, ओ वाओ सलमा, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। देखिए, जो पॉइंट मेरा ये है कि हम सब टीचर्स नहीं हैं, हम लीडर्स हैं। लीडर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर क्लास, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम में ये क्वालिटीज होंगी तो हम ट्रांसफर करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे अगर माँ जो है सारा दिन रोती रहेगी, परेशान होगी, तो बच्चे में भी नेगेटिव वाइब्स आती। ठीक है, प्रॉब्लम का ना होना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है आज के दौर में। खैर, दिस इज वेरी ट्रू। प्रॉब्लम का ना होना भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है अगर देखा जाए, और प्रॉब्लम को क्रिएट करना भी एक बड़ा आर्ट होता है, जो आजकल देखें, बड़ा कॉमन ये है। तो प्रॉब्लम है। आप कहते हैं ना टीचर लीडर है, जी बिल्कुल। ये तो लीडर है, उनको टीचर बना देना। नहीं, ये तो नहीं कर सकते ना हम टीचर ही लीडर बन जाए तो दैट्स गुड, बिकॉज उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं। अब जो वो आप लीडर बोल रही हैं ना, तो उससे तो खैर उनको मे टीचर दैट बना वर्ड दें तो नॉट वैसे फॉलो। लीडर बन जाए। देखिए, आपके आइडियाज हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम भी आम आवाम हैं, हमारी बात कौन सुनने वाला है यहाँ पे? एनी हाउ, these are the all skills, little bit of skills था, कुछ skills मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाई हैं, ताकि मैं आपको उस तरफ मोटिवेशन की तरफ ले आऊं कि आपको ये किसी भी तरह से आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है अपने क्लासरूम में। इट कैन बी विद द उर्दू, इंग्लिश, और इन एनी सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग। साइंस में भी कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। हिस्ट्री में एक थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, यू हैव टू प्रोवाइड एनवायरमेंट। ठीक है, till far, अभी तक कोई, is there any question, any problem, anything you want to ask? Anything? Okay, it means we should move ahead. Acha, there's one explorer club. Uh, okay, these are, okay, this is one of the activity. Acha, there's something on the chat. ठीक है. Oh, thank you so much, Sana. I am a friendly person. ठीक है, this is just one of the activity which we are going to give you as a sample. इसके बाद I'll just give you the names of the activity. ठीक. सपोज फरा, हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है यार, लेके जाते तो मजा आता। ठीक है, यू हैव टू चूज अ नेचर स्पॉट। कोई भी स्पॉट ले लें, अपने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर ले लें, कोई भी है, वी हैव स्कूल्स, यू कैन फ्रेम आउट। आई थिंक परमिशन मिल जाती है if it's accessible। इसके बाद पिक द लैंग्वेज और लेवल। नाउ बाय द लैंग्वेज एंड लेवल आई मीन्स, बिकॉज आई डील विद द प्रोफिशिएंसी, सो मेरे पास वो लेवल होते हैं A1, A2, B1, B2, C2। ठीक है, हम इसको लेवल के बेस पे भी ले सकते हैं, लाइक यू आर डीलिंग विद ग्रेड 1, 6th ग्रेड, इसके बाद 8th ग्रेड का बच्चा है, लाइक दिस। ठीक, अभी हमें एक लैंग्वेज उनको वोकेबलरी देनी है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ अस डू हैव दिस प्रॉब्लम विच आई कीप ऑन हियरिंग, कि हमें कहते हैं कि यार हमारे पास वोकेबलरी नहीं है। हमें लिखना सब कुछ आता है, बोलना सब कुछ आता है, वर्ड्स नहीं मिलते। ये बड़ा मजे का सवाल होता है। कुछ ऐसा जादू कर लें, डू सम मैजिक, कि हमारे अंदर वो वोकैब अंदर आ जाए। So there's no magic for it. You have to try different strategies. This is the strategy which, as an educator, we can follow with our children. As a home tutor, you can follow with your children. One of the strategies. Then I'll just tell you the others. आपको लेवल चूज करना है कि कौन से लेवल के बच्चे को वो कैब आपको देना है, लैंग्वेज उनको डिलीवर करना है। Create a list. Let's see if we talk about grade 2 student, and we are giving them, I want to give them vocabulary for greenery, for garden. Simple, simple garden. Just give them the list of few words: tree, flower, what else? Shovel, Greenery. Sorry, shovel, I couldn't hear you properly. shovel.
Okay, shovel. Okay. Just you have to prepare as a teacher according to your grade, remember. Or if you are an instructor, you can take the proficiency का level ले सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ कुछ और words होते हैं adults के लिए. Now, provide them list to, you can do it individually, you can give it in a group. आप उनको आधे घंटे 40 minutes की क्लास में बाहर लेकर जाएं, उनको handouts दे दें. Come on, go and find out the words related to this. They are going to find out. You can give them. ये first step होगा आपका. ठीक है, वो लोग find out करके बड़े excited होके आपके पास आएंगे. I have this, written form में देंगे, तो वो भी आपके पास. Step 1, आपका एक objective हो गया. They got so many words along with trees. Suppose अगर आपने plant दे दिया है, तो plants के there might be different plants with different shades. Leaves के different designs होते हैं, shades होते हैं. बहुत सारे plants होते हैं हमारे garden में. ठीक है, हमारा बहुत सारा एक step हो गया. It will be covered in 10 minutes. After that, they are going to have discussion. Discussion क्या हो गया? Speaking skills. Discussions क्या हो गया? Speaking skills हो रही हैं develop, ideas pour down हो रहे हैं, generate हो रहे हैं. मुझे नहीं आ रहा, मैंने कुछ भी नहीं लिया. I was like very shy और I was very lazy. But I'm listening to my classmate. अच्छा इसने ये वाला shade, अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है. वो एक fun loving, stress नहीं होएगा वहाँ पे. Expansion कैसे होएगा? अच्छा let me see. Exchange of knowledge. Yeah, Sana. Thank you. Exchange of knowledge which we want. ये सारी चीजें हमें चाहिए. We are getting it in a fun loving way. ये एक activity है. Remember, this is one of the activity for all the levels, for all the grades. We can do it. ठीक है. vocab हमें मिल गई. We got at least 15 to 20 words. ठीक है, मेरे दिमाग में fit हो गए, मैंने लिखे नहीं थे, but because everyone was speaking out loudly, कोई there were some students very excitedly, miss मेरा देख लें like this, and we got it. अच्छा यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा. You don't have to speak in Urdu. Got it? ये कोई मसला नहीं होगा. ये नहीं बोलेंगे आप, ये नहीं बोलेंगे हम. बच्चा freely काम करेगा. जब आप free होते, like right now, I don't have any कोई मेरे पास बर्डन नहीं है कि मिस फरा मुझे डांट देंगी, ये कर देंगी, टाइम ज्यादा हो गया है. आई नो शी इज अ गुड पर्सन, तो मैं फ्रीली बहुत कुछ बोल दूंगी. ठीक है मिस फरा. इसके बाद डिस्कशन होगा. एंड डिस्कशन, नोबडी कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन. एंड डिस्कशन एट अर्ली एज. दे डोंट नो दे आर डिस्कसिंग, but actually they are discussing and generating the ideas and getting the knowledge. ठीक है. And after that, expansion कैसे हो सकती है? Expansion means expand कैसे कर सकते हैं in different areas. You can discuss in the science कि कौन कौन से plants से. You can draw, you can label them, you can talk about the benefits, usage, how it can be helpful to us. What else? Creative writing हो सकती है. अच्छा एक ही क्लास में हो रही है, इसके different parts होंगे. You just need to take them to once outside. Arts of different leaves. Yes, Sana. Arts of different leaves. Only once you have taken them outside the class, and you can cover different objectives. Creative writing भी हो जाएगी. What happened over there? क्या किया था आपने? How was the experience? Experience में sharing में आपके feelings enhance हो रही हैं. Expression. Speaking is very difficult for most of us. Expressing yourself. देखिए हमारे पास अभी माशाल्लाह कितने 16 members हो गए. उनमें से देखें express बहुत कम कर सकते हैं due to some reason. So these are the some of the benefits. End में conclusion क्या निकलता है? Conclusion means the feedback क्या निकलता है? हम बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि आपका conclusion क्या निकला? What was your expression when you were labeling the plants? How were you feeling when you were the first one to come out with so many different ideas? How was your expression? ये सारी चीजें आपकी लिसनिंग में भी हेल्पफुल रहेंगी, स्पीकिंग में भी हेल्पफुल करेंगी, रीडिंग में भी होगा. बिकॉज देन यू कैन स्टार्ट. मैं आपको प्रिसाइजली लैंग्वेज का बताया. Because when you are going to share this in pairs or in group, you are going to come out and read. And when you are reading your own feelings, that's an amazing work by the students. और वो बच्चा ले रहा होता है, सीख रहा होता है. That child is learning. जब आपका कोई expression या expressions कोई सुन रहा होता है ना, people are listening at your work. They feel amazing and they will never forget this experience. This is actually one of the activity. Besides that, ठीक है. Okay. G. These are some of the, yes. Any questions so far?
Okay, quiz is there. बड़ा easy है भाई, सब जीत जाएंगे. अच्छा. These are some of the activities which we can design according to our class. Nature alphabet hunt. इसमें ये होगा अगर आप alphabets के flash cards दे दें उनको, and they can going to find out that from tea tree, for flower, they can easily generate lots of vocabulary. This might be very helpful in the primary level. Nature bingo game, you know that we associate different words and we can link them with them. Story stones, another one of the strategy. इसमें क्या होगा? You can give them different words and they can create stories or reflect their emotion. Suppose if I'm giving you a story that happiness, go and find. Maybe I'll pick up a flower and find this is my happiness. Maybe I had the fun because I was outside the class having good time. There are different instructions for all these activities, which of course there was a time limitation for me, so I couldn't put forward to you people. But these are some of the names which you will search. You'll find out a very good feedback from the internet. You'll get all the resources. Nature vocabulary scavenger hunt. This is very common. Nature themed role play. This might be for the secondary level. You can start the role play, like suppose there's a gardener. That gardener is working over there. The character of gardener can be taken over there. If you are taking to a place where another class is going on. Suppose if you're talking about school, you're not allowed to take them outside the building. Then what about the behavior of those students, the teacher? If you're allowed, you can just use that there was another family sitting over there. They were having good time. They were having, I use role model mostly. Yeah. Salma, that's very good. I think that's a very beneficial way. Yeah. So there's a lots of ways you can just turn this language into. Okay, storytelling in wild. By this, we mean, let me just move it over. You can create a story related to your own topics. In the wild, like suppose you are taking a story of biography, autobiography or biography, usually we do it in primary section that I'm a book. What are my uses? I feel sad, I feel happy. All these activities we usually do, the language teachers. So accordingly, you can just start the storytelling in the wild means you are going to go and frame out. You can just start, I'm a plant and what might be my uses. What this can be done in a circle also. Besides this, you can also start a story. Just give them a phrase and they are going to continue. In this way, everyone is going to be able to participate in the story. There are different ways. For suppose for grade 1, grade 2, you can just give them one word and start a story if you've ever heard. For upper levels, you can just give them one phrase. Then in a circle, they can express their own story, which was their best part, which was the best thing. That can be done in a circle. There are different strategies. These all are very minor one and very easily adopted. Nature sound identification. Again, somebody said that I love the birds, I love their sounds. So identification of nature, sounds, birds, everything can be linked with it according to your resources, but resources you are going to provide according to your own, looking at your own boundaries and limitations. But again, I would say that these are very simple things. If you have intentions to do it, you are going to do it. But again, I'm repeating, these are some of the strategies which usually language teachers follow. G, any questions so far? Yes. Basically, I hope I'm able to convey my message regarding my only objective was there to motivate you people towards this. And then definitely these are some of the activities. There are lots of activities when you are going to find out, you're going to be amazed. Okay, any questions so far? Anything which is confusing for you? Oh, thank you, Salma. So you're already doing it, I think so. that was a wonderful thing, Humaira. That you did a really great job, and the explanation was very clear and
very brief as well. I hope I am not taking too much of your time, because I think I was supposed to complete it within 40-50 minutes. But anyhow, So all the participants are requested to please don't forget to fill up the quiz, because this in this you are going to give the feedback, as well as your certificates are associated with it. If you fill up any of the 4 quizzes, then you are eligible for the certificate as well for the whole complete Clean the Stuff training series. ठीक है, so इसको मिस ना कीजिएगा। अगर मतलब अभी ये खुला हुआ है, अगर आपने पिछला वाला मिस कर दिया है तो आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। सो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी है, सो यू कैन फिल अप दैट प्रीवियस क्विज एज वेल एंड ज्वाइन द सेशन क्विज। ठीक है ना? यस। एंड हुमैरा ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज बताई हैं। दैट वाज द सर्कल टाइम वाली भी, कि आप उसमें बहुत सारी अच्छी तरह से अपनी स्टोरीज बना सकते हैं। एंड स्टोरीज one thing, Farah, I want to add, देखें, there's one activity, okay, which is given to us, or which is usually we come to know. It depends on the teacher how she is going to implement that in the class. My methodology is this: मैं एक activity में से listening, speaking, writing, reading का कुछ ना कुछ निकाल के उनको दे देती हूँ। In this way, जहाँ पे बच्चा weak होता है, जहाँ पे struggle कर रहा होता है, वो उसके लिए enhancing का काम करती है। If the child is able to speak very good, he is very good, or she is very good at speaking and unfortunately not able to write, तो जब उसकी speaking होती है, तो automatically वो चीजें generate होके उसकी written में भी helpful है। तो it depends on the teacher. ये तो some of the names are given. There are lots of activities which are related to this. बिल्कुल ऐसा ही है हुमैरा, आई 100% एग्री विद यू। और मेरे बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा होता था जब वो मैं उनसे पूछना शुरू करती थी ना, एंड दे ब्रेक लगाना, स्टॉप लगाना, इट्स डिफिकल्ट उनको, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू स्पीक अप इन दैट क्लास। Exactly. And some of the students, like I have also, even Farah, adults भी जो होते हैं ना, मैंने आपने भी ऑब्जर्व किया होता है, वो मे बी कितने भी आप टीचर इज वेरी फ्रेंडली है क्या, दे हेजिटेट एट अ लेवल, हेजिटेशन होती है। जैसे आप उनको फ्री दे दें ना, ब्रेकअप रूम्स में भेज दें, डिस्कशंस की तरफ भेज दें, देन लुक एट देम, क्या आइडियाज निकल रहे होते हैं, एंड दे फील सो गुड, दे फील सो हैप्पी। अच्छा मिस फारा, एक अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको फिर कन्वे कर दूंगी, आप अपने जो भी आपके ऑडियंस है उनको कन्वे कर लीजिएगा अबाउट माय वर्कशॉप, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर लूंगी। फिर आप कन्वे कर, क्योंकि आई डिडंट डिस्कस, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं भी अनाउंसमेंट कर लूं। आई डिस्कस विद यू, देन यू कैन जस्ट फॉरवर्ड द मैसेज, इट विल बी। थैंक्स फॉर योर टाइम स्वीटहार्ट, आप लोगों ने टाइम निकाला, बिकॉज देखें हम लोग तो बैठे ही अवेयरनेस के लिए हैं। अब वो लेवल आ गया है हमारा, थोड़ी सी एज भी बड़ी हो गई है, कि वी वांट अदर्स टू, जो हमने नहीं सीखा अपनी एज में ना, दैट वाज अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला, या वी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी। अभी अगर आपको मिल रही है तो अवेल दीजिए एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। सुनने से काम नहीं होगा। आई हैव गॉन टू लॉट्स ऑफ वर्कशॉप, बहुत सी वर्कशॉप ले ली, सब कुछ ले लिया, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अभी हमने वर्बली किया है, मैं फरा को इसलिए कह रही थी, अगर अब वहां पे बैठ के करते तो वो हमारा लाइफ टाइम मेमोरी हो जाता। लाइफ टाइम मतलब कभी नहीं भूलते, दिस थिंग हैपेंड, इतना मजा आया था। तो हमारी तो खैर ऑनलाइन सेशन है और इट्स नॉट पॉसिबल, वो तो आई वाज जस्ट जोकिंग विद फरा। तो इट इज द सेम केस विद देम, आप जब तक उनको इम्प्लीमेंट एक दफा करवाओगे, देन यू विल रिमेम्बर, अरे मुझे फिर करवाना। इसके इतने बेनिफिट्स हैं लैंग्वेज के, कि आपको इन नो टाइम यू आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी विद यू, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी अमेजिंग। एक दफा उनके पास वर्ड्स आ जाएंगे तो दे विल बी एबल टू जनरेट एंड स्पीक ऑल्सो विदाउट हेजिटेशन। यस, बेसिकली आप इसको कंटिन्यूटी के अंदर जब तक नहीं रखोगे तो वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक क्लास अगर करा दोगे तो वो बाकी का कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा। सो कीप दैट, That's why, Farah, I said in the very beginning, कि make it a part of your lesson plan, part of your life, even your life. Because whatever we do, it's easy to deliver. जब हम कोई चीज अपने साथ रखते हैं ना, तो it is easy to deliver. लेकिन जब हम कोई चीज forcefully या कभी कभी वाली करते हैं, तो we forget, we are humans. तो जो चीज हमारे अंदर होगी, वही पास on. बिल्कुल।
So inshallah I am hoping कि हमारी एक फिजिकल भी होने वाली होगी and बेसिकली चलें यहाँ पे भी अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ कि हमारा जो सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी दैट विल बी द फिजिकल. सो आपको वहां पे बहुत सारी इंटरेक्शन भी मिल रही होगी. वो आप जरूर किसी गार्डन शार्डन में रखिएगा मिस फरा. हाँ. और सी व्यू, आई वुड सजेस्ट सी व्यू. लेट्स सी कि क्या डिसाइड होता है. सो वी विल डू दैट इंशाल्लाह. ठीक है. So thank you to all of you and thank you so much Humaira for Thank you so much. such a wonderful session and just keep connected and आपको बाकी सारी information related to the green wisdom मिलती रहेगी. हमारा next session inshallah will be on 30th December. So keep waited for it. ठीक है. इसको जरूर मिस मत कीजिएगा and be with us. ठीक है. चलें. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz and thanks again. Thank you to Humaira and thank you to all the participants for joining us and so energetic during the session. So, Allah Hafiz.